वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले ऑफ हॉगवर्ट्स लेगेसी। तो पिछले वीडियो में प्रोफेसर फिग के साथ पहुंचा हॉगवर्ट्स, जहां जादुई टोपी ने मुझे मेरा हाउस ग्रिफिंडोर दिया। खैर मैं अपने कॉमन रूम में तो सेटल हो गया था, लेकिन हाँ, कैसल एक्सप्लोर करना भी बाकी था, जो करूंगा मैं आज के इस गेम प्ले में। तो यार लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज की गेम प्ले। Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. ओके, मेरे ख्याल से मुझे इतना क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन एक सेकंड, हॉगमीड्स है क्या? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and ओके, देखो पहले मैं तुम्हें हॉग्समीड का शॉर्ट में समझा देता हूँ। वो एक ऐसी प्लेस है, मतलब मार्केट टाइप की, जहाँ पे तुम्हें जादुई छड़ी और स्पेल्स वगैरह, या फिर मतलब एक शॉप, जितने भी स्पेल्स का है, जितने भी आइटम्स होंगे वहाँ तुम्हें मिल जाएंगे, क्लोथिंग वगैरह सारे। तो हॉग्समीड वो जगह है, जैसे हैरी पॉटर में एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ किताबें वगैरह मिलती थी, सेम वैसे ही। अभी वहाँ जाना बाकी है, पहले कन्वर्सेशन खत्म हो जाए शायद, मैं उसके बाद जाऊँगा। Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the car. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. देखो मेरी तारीफ हो रही है तो मुझे लगता है मैंने अच्छे से जितना भी स्पेल्स था वो सब किया। Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. ओके, तो जो आगे की हॉगवर्ट्स की ट्रिप है वो हमें करवाएंगे प्रोफेसर फिग। Your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about. तो अगर मुझे हॉग्समीड तक जाना है तो सबसे पहले मुझे अपनी क्लासेस खत्म करनी पड़ेगी, एंड कुछ एक असाइनमेंट है वो पूरा करना पड़ेगा। It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? अब देखो मैंने बोला तो था, तो मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, सच ही बोल देता हूँ। She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map?
Unfold it and have a look. ओके तो अभी एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, फास्ट ट्रैवल कर सकते हो तुम इसे। एंड मैं तुम्हें बता दूं, जो भी प्रोफेसर फिक्स से बात हुई, तो जो भी कुछ हुआ था हमारे साथ हॉगवर्ट्स आने से पहले, तो जितना भी कुछ हुआ था, तो उन्हें लगता है कि इसमें शायद हेडमास्टर भी इन्वॉल्व है, एंड इसलिए वो नहीं चाहता कि अभी बातें मतलब मैं दूसरों को बताऊं, क्योंकि अगर मैं प्रोफेसर वीजली को ही बताता हूं तो हेडमास्टर तक बात पहुंच ही जाएगी। Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. चलो सही है, मतलब अभी मुझे और भी मैजिक सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो मुझे अभी क्लास अटेंड करना है, एंड काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं अपनी क्लास को देखने के लिए। भाई फिलहाल तुम लोग यहाँ देख सकते हो पेंटिंग्स में सारे, भाई व्यू तो कमाल है। खैर अभी इसमें बहुत एक्सप्लोर करना है, काफ़ी बड़ी मैप है, जो कि अच्छी बात है, आराम से मैं एक्सप्लोर करूँगा। यार इस गेम में, मतलब इस जनरेशन की गेम में, एंड ये थोड़े बहुत जो चीज़ है ना, मतलब जैसे दरवाज़ा वगैरह खुलने में दिक्कत, वो जो आ रहा है ग्लिच, वो दिक्कत है। बाकी सब सही है, स्टोरी वगैरह, मतलब डिज़ाइन वगैरह सब ओके ओके ओके। एक सेकंड, घोस्ट्स। अरे तुम लोग कुछ करो भाई, सैल्यूट वगैरह कुछ। लगता है ये वाले नहीं करते। यार यहाँ मुझे कुछ देख तो नहीं रहा है अभी, क्योंकि मुझे ऐसे पेजेस ही फाइंड करने हैं, यहाँ उड़ते रहते हैं ऐसे पेजेस। कुछ है क्या यहाँ पे? एक सेकंड, सामने मुझे कुछ चमकता हुआ दिख रहा है। ओके वो दूसरे फ्लोर, वो अपर फ्लोर पे। ओके ये रहा। एक सेकंड में वॉशरूम में आ गया। खैर जहाँ भी आना पड़े मुझे चाहिए तो ये चीज़ है। एक सेकंड, कोई जादुई शीशा था क्या यार? मैं इसके अंदर जा सकता हूँ क्या? शायद आगे, क्योंकि हो सकता है कोई स्पेल्स वगैरह हो। एक सेकंड, वहाँ भी कुछ है? नहीं नहीं, वो उस तरफ है। मुझे लगता है मैंने सब कुछ देख लिया है यहाँ पे। फाइनली मैंने सब कुछ देख लिया। टाइम अभी बाहर निकलेगा। ओके ये जो तुम्हें दिख रही है ना लैम्प जैसी चीज़ है, तो ये फास्ट ट्रैवल लोकेशन है। यहाँ मैं आराम से आ सकता हूँ कभी भी, अगर मैं ज़्यादा दूर निकल गया तो। भाई पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी खूबसूरत है। अगर ऐसा स्कूल होता ना तो मैं, मतलब घर ही नहीं आता, वैसा वाला सीन है। इतना कमाल का स्कूल अगर होता मेरा तो। ओके ये रही मेरी क्लास। ओके एक सेकंड, एफ ओके सही। Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. भाई ये प्रोफेसर मजेदार है यार। My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? देखो मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and
take turns summoning them out of one another's hands. Okay, ये कुछ मजेदार Only होने वाला one है। book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. ओके पहले तो मुझे ये स्पेल सीखना पड़ेगा। सीखना क्या पड़ेगा बस मुझे। ओके सही, चलो स्पेस। अरे बच गया। सही सही सही। क्या बचा हूँ मैं, नहीं तो फिर से करना पड़ता। खैर ये मैंने एक बार में कर लिया। अभी तक जितने मैंने सब एक ही बार में किया वैसे, और ये भी काफी इजी था। That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. देखो मुझे पहले ही से पता था कि मैं नॉर्मल स्कूल के लिए नहीं बना हूँ। मुझे ऐसे Very good, everyone. That's enough of that. ऐसे ही स्कूल्स के लिए बना हूँ मैं। As you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ओके ये काफी मजेदार है। I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, इस साल तो वैसे कैंसिल हो चुका है क्विडिच, लेकिन मुझे लगता है वो आगे डीएलसी वगैरह में आएगा, prowess with the summoning charm क्योंकि यार वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है अगर मैं कहूँ तो। शायद मेरी बात से कुछ लोग एग्री भी करें। So why don't we have our newest student start us off? ओके मेरी ही बारी है। देखो मैंने सीखा तो था और मैं कर तो लूंगा। Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Okay. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. हाँ ये सही बात Show है us सर how आपने। it's done. प्रैक्टिस से ही जल्दी आसानी से सीखा जा सकता है। और देखो अभी गेम ये है कि मुझे इन बॉल्स को आगे लेके आना है, लेकिन इतना भी आगे नहीं कि गिरा दूं मैं इसे। अरे लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि इसे रोकते कैसे। एक सेकंड शायद मैंने ज़्यादा दबा के रख दिया था। That's it. Stay अरे यार। focused. Splendid. Don't lose your composure. देखो मैंने तीनों गिरा तो दिया, लेकिन हाँ मैंने खींच लिया था क्योंकि खींचना मेन था। Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. देखो यार इस बार मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा You'll be the blues just as before, and Miss Onai, क्योंकि मैं समझ you चुका are हूँ playing इसको कैसे red. करना है। Clear? Yes, sir. Be sharp. ओके तो मेरे ब्लू हैं, ठीक है। मुझे ब्लू बॉल्स को आगे लाना है, एंड जितना ये आगे आगे रुक जाता है उतना मुझे पॉइंट्स मिलेगा। सही है। ओके मेरी बारी है। ओके शायद इतना काफी होगा। भाई मैंने उसको बॉल को नीचे गिरा दिया। Back for that. ओके भाई लगता है उसने दिल पे ले लिया बस। ओके मेरी बारी। ओके बस सही सही सही, थोड़ा आगे आ जा भाई। ओके परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। 2 आ चुका है, एक और हो जाएगा, हैट्रिक मार दूंगा मैं तो। अरे लेकिन अगर मैं उसे लाता हूँ तो फिर ओके ओके मैं करके देखता हूँ। There we go. मैं फिर भी उससे आ गया हूँ अभी। ओके ओके सही। भाई क्या बचा है, क्या रुक रुक रुक, क्या बचा है दोस्त, क्या और एक सेकंड। परफेक्ट भाई, मैंने तीनों बॉल को ले आया ब्लू लाइन पे। क्या बात है, मजा ही आ गया। ऐसे जीतते हैं। Let us make this a bit more interesting, shall we? ओके ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। I think we are well past interesting at this point. I'll say.
देखो मैं तो लेट से आया हूँ लेकिन ये लोग पहले से थे तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने काफी प्रैक्टिस की होगी। नहीं कोई बात नहीं, मैं कोशिश तो करूँगा। अभी पिछला राउंड तो मैं जीत चुका हूँ, अभी का पता नहीं। ओके मेरी बारी है क्या? ठीक है ओके, उसका 0 हो गया भाई, उसका नीचे गिर गया शायद। नहीं उसका 30 है अभी तक भाई, थोड़ा आगे थोड़ा। अरे शिट वो गिरा देगा। अरे यार मैं 0 पे हूँ अभी। नहीं कोई बात नहीं, 2 बॉल्स हैं अभी, हो सकता है। बहुत अच्छे। ओके एक सेकेंड, इसके भी 0 हो गया था भाई। खैर वो भी 30 पे है क्योंकि इसका भी बॉल नीचे था ना। ओके इतना काफी होगा। ओके सेम नहीं 1 सेकेंड, उसके 50 है। शायद मैंने थोड़ा आगे कर दिया उसको बॉल, कोई बात नहीं। भाई उसके 100 हो गए यार, मेरे 30 ही हैं। क्या करूं मैं अभी? खैर जो भी है मैं कोशिश करूंगा। ओके बेहतर। देखो सही था, हार जीत लग रही रहती है और इन लोगों ने काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया है तो जीतना बनता भी था। वैसे ही पिछला राउंड मैं भी जीत चुका हूँ। Very good, both of you. Well done. ओके तो मैंने क्लासेस तो शायद कंप्लीट कर लिया। नहीं अभी एक और क्लास है वो डार्क आर्ट्स का, वो भी अभी करना है कंप्लीट। Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Okay. टाइम है भी जाके प्रोफेसर से बात करने का। You can. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. ओके तो मेरे ख्याल से प्रोफेसर फिग और इनकी बात हो रखी है, तो एक और मतलब मेरे ख्याल से जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें शायद मुझे कुछ अलग स्पेल्स वगैरह सिखाए जाएंगे, तो मुझे बाद में मिलना है उनसे। पहले मैं इससे बात कर लूँ। Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well,
Better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. ओके जो भी है, अभी तो मुझे एक और क्लास अटेंड करना है जो कि है डार्क आर्ट्स का। एक सेकंड, ये पहले मैं ये पेज ले लूँ। अरे मैंने गलत प्रेस कर दिया, अब ना मजा आएगा। एक सेकंड कोई तो है। ओके ये रहा, प्रीव्स द टेक्सचर था उधर। खैर ये मेरी डार्क आर्ट्स की क्लास है किधर? थोड़ा एक सेकंड, मैं गलत रास्ते पे हो गया। नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ। भाई काफी लंबा स्कूल है यार ये। अच्छा एक सेकंड रुको। यहाँ भी कुछ भी नहीं है। ओके अब किया इन लोगों ने। देखो वो शीशा जो था वो चमक तो रहा था, लेकिन अभी मेरे पास वो लेवल नहीं है। मतलब अभी मैं उतनी स्टोरी को एक्सप्लोर नहीं किया हूँ, अभी उतना अपग्रेड नहीं किया हूँ कि मैं वो मिरर वगैरह खोल सकूँ। एक सेकंड, ये कलेक्ट करना पड़ेगा पहले मुझे। ठीक है, ये कलेक्टेबल सही है जो तुम्हें पेजेस दिख रही है ना, और ये थोड़ा बहुत स्किल्स बनाने में हेल्प करता है। एक सेकंड, कुछ होता है क्या इससे? देखो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हैं ये एक पजल टाइप का है कुछ, क्योंकि यहाँ भी एक ग्लोब है, वहाँ भी एक ग्लोब है, उसे भी घुमा सकता हूँ मैं, और एंड वहाँ भी एक ग्लोब है, तो कुछ पजल वाला सीन होगा। खैर मैं वो बाद में देखूँगा क्या है वो। ओके एक सेकंड, शायद यही है मेरी क्लास। भाई यहाँ तो डुएल हो रहा है। Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Knowledge तो मुझे भी चाहिए था। To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Okay, पहले मुझे सीखना पड़ेगा। Okay, और मैं सीख गया। Levioso. Now, let's try something a little larger. मैं तो बोलता हूँ मैम कि मैं फिर से वो स्कली उठा दूँ क्या? उसी पे ट्राई करना है मुझे। लेकिन भाई ये चीज़ भी काफ़ी खतरनाक है। हैरी पॉटर मूवीज़ में ये चीज़ एक बार ड्रैगन बन गया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ कुछ चेंज तो हुआ था किसी न किसी चीज़ में। ये जो डमी है, खैर अभी तो मुझे इस पे वो स्पेल यूज़ करना है। ओके ठीक है, ये प्रोटेक्ट किया हुआ है अपने आप को किसी स्पेल से। काफ़ी दिमाग वाला डमी है। एक सेकंड। See how the dummy deflected your cast? ठीक है। This time, cast Levioso first, then the basic cast. ओके तो अगर मुझे इसको ये जो प्रोटेक्टर शील्ड है उसको हटाना है तो मुझे पहले लेवियोसो ट्राई करना था। समझ गया मैं। आसान है शील्ड हटाने के लिए लेवियोसो। But the best way to practice is by dueling. अब मजा आएगा। We'll start with you. एंड यही वो बंदा है जिसने अभी स्कल गिराया था दूसरे स्टूडेंट के ऊपर। Proper Hogwarts welcome. Now, मैं काफी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। Using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin.
Okay, time है अभी थोड़े skills दिखाने का. Leviosa. Protego. Easy. Stupefy. There you go. Complicates things. देखो मेरी ये जो है ना ये बॉन्ड ये सेकंड हैंड है, नहीं तो अभी तक मैं इसे फेंक चुका होता था. I know. अब मैं जाऊंगा तो फिर अपनी एक नई बॉन्ड कर दूंगा. होमस्गेट जाना पड़ेगा उसके लिए मुझे. Let's just say I'm a quick learner. भाई मैंने इसे खत्म कर दिया. एक हिट भी नहीं दिया इसने मुझे. एक हिट भी ब्रो. Not bad for a beginner. You give as good as you get. कोई बात नहीं. होता है. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. ओके तो अभी और भी असाइनमेंट्स हैं जो मुझे पूरे करने हैं, लेकिन फिलहाल तो मुझे जाकर मिलना है. एक सेकंड, अभी मुझे इससे बात करनी Nice है. work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. मुझे लगता है कि मुझे इसे बताना नहीं चाहिए. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत शक भी हो रहा है मुझे इस चीज पे. क्या है ये? Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. ठीक है, तो अगर मुझे Till next time. जिस चीज़ की बात कर रहा था, अगर मुझे उस क्लब में जाना है तो मुझे एक बंदे से मिलना पड़ेगा, लेकिन मैं वो बाद में देखूंगा. अभी मुझे उसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. अच्छा, फील्ड गाइड से याद आया, मुझे पहले जाके मिलना है शायद प्रोफेसर वीजली से, क्योंकि मैंने अपना दोनों क्लास खत्म कर लिया है अभी. एंड उसके बाद फिर मैं जाऊंगा ये होम्सगेट, जहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मिलेंगी. क्योंकि यार सही बताओ तो मैं डायरेक्टली स्कूल में आ गया हूँ, वो भी मैंने अपनी चीज़ें भी नहीं परचेस की हैं. Okay, I have to begin. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan.
Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? देखो मैम जानना तो चाहती है लेकिन मैं यार बताना नहीं चाहता हूँ तो मेरे ख्याल से नो ही बोलना अच्छा रहेगा क्योंकि प्रोफेसर फिग ने भी मना ही किया है अभी एंड उन्हें डाउट भी है एंड अगर मैं इनको बात बताता तो हेडमास्टर तक पहुँच सकती है ना इसलिए Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Okay, extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way Okay, here, sorry वो including अरे यार seeds, potion recipes, okay and sorry वो spellcrafts. Hogsmeade था वो Thank you, Professor. Hogsmeade नहीं था And Mr. मैं उसे तब से Ollivander Hogsmeade कह रहा हूँ वो will connect you Hogsmeade है with the perfect थोड़ा बहुत wand. confusion हो जाता है You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. ठीक है यार अब चला जाएगा क्योंकि अभी मुझे इतने सारे क्वेश्चंस नहीं करने थे I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. सेबेस्टियन के साथ ही जाता हूँ मैं क्योंकि वो कुछ बातें भी कर रहा था कि कुछ रूल्स वगैरह एंड कुछ है यहाँ पे छुपा हुआ तो जानना सही रहेगा कि आखिर वो किस चीज़ के बारे में बात कर He'll रहा keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. ओके तो अभी मुझे जाके अपने लिए कुछ शॉपिंग करना है उसके हॉग्समीड में वो एक विलेज है जिसे मैं तब से होम्सगेट कह रहा था लेकिन वहाँ मुझे अकेला नहीं जाना लेकिन वहाँ मुझे ऐसे अकेले नहीं जाना है वहाँ अब जाने के लिए पहले मुझे सेबेस्टियन से मिलना पड़ेगा जो कि नहीं सेबेस्टियन छोड़ो पहले मुझे इनसे मिलना पड़ेगा You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. तो पहले देखो अभी तो कुछ टास्क है जो मुझे कंप्लीट करना है प्रोफेसर के लिए एंड अगर मैं वो कर लेता हूँ तो फिर मुझे वो मैजिक सिखा देंगे मतलब वो अगर तुम लोगों ने पिछली वीडियो देखी है उसमें एक मूवमेंट था जब प्रोफेसर फिग ने सीढ़ियाँ बनाई थी तो वही है रिपेयर वो किसी भी टूटी चीज़ को मतलब कुछ मिनट्स क्या है कुछ सेकंड में ही ठीक कर देता है पहले मैं ये ले लूँ अरे यार मैं दूसरे इस पे ठीक है मुझे अभी एक और शायद ऐसी पेज ढूंढनी है उसके बाद मैं ये स्पेल सीख पाऊंगा जो कि काफ़ी नहीं यार 20 footsteps maybe. A flying page must be around here somewhere. Revelio. इसके ऊपर तो पेज नहीं बुक कर रहे हैं भाई कितना पड़ता है यार तू ओके ये रहा वो पेज अरे मैं गलत स्पेल कर रहा हूँ ओके ये रहा चलो सही मैंने दोनों पेज तो कलेक्ट कर लिया है एंड अब मैं वो स्पेल सीख सकता हूँ जिससे मैं कोई भी चीज़ बना दूंगा अगर वो टूटी हुई है तो जो कि अच्छी बात है यह सीखना भी था मुझे क्योंकि ऐसी बहुत लोकेशन है जहाँ पे सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं तो मैं वहाँ जा सकता हूँ आराम से I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now,
Wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. मुझे लगता है जैसे जैसे स्पेल्स होंगी ना वैसे वैसे हार्ड होता जाएगा. ओके भाई उस रेड वाले से बचना है मुझे. अरे शिट, थोड़ा टाइम लगा दिया मैंने. मैं पहुंच जाऊंगा शायद. हाँ सही. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove. ओके वो रही शायद वो broken statue है. मुझे अभी इस पे प्रैक्टिस करनी है. तो मैं एक बार बना के देखता हूँ. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed भाई ये तो मजेदार है. ये करने में भी काफी मजा आएगा मुझे. जितनी भी टूटी हुई चीजें हैं मैं वो आराम से बना दूँ. एक सेकंड वहाँ कुछ चमक रहा है. ओके इसके अंदर शायद कुछ बंद है एंड मुझे इस पे क्या ट्राई करना चाहिए. ओके ये रहा वो पेज. देखो जो स्पेल सीखना था वो तो मैं सीख चुका हूँ अभी एंड शायद अब मुझे जाके सेबेस्टियन से मिलना है. ये फाउंटेन क्या करता है? एक सेकंड. इसका कोई खास यूज तो नहीं दिखा मुझे. ओके एक सेकंड. यहाँ पे कुछ है लेकिन छोड़ो अभी उसे हटाओ यार. वो वैसे भी वहाँ पे रहेगी लेकिन एक सेकंड मैं गलत रास्ते पे हूँ. मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि यार वैसे भी हॉग्समीड के लिए काफ़ी लेट हो चुका है एंड मैं अगर अभी पेजेस में ढूंढने बैठ गया तो फिर पता चला एक और नया असाइनमेंट और फिर मुझे टाइम लग जाएगा एंड मैं वो नहीं चाहता. पहले मुझे एक्सप्लोर करना है. एक सेकंड. ये कुछ भाई जो तुमने किया तो फिर से करो. तो ये पक्का ये स्टैचू स्टिल नहीं थी. Okay, here are Sebastian. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? टाइम है भी जाने का वहाँ पे. एंड भाई कुछ ऐसा दिखता है स्कूल के बाहर एंड वो अगर तुम्हें दिख रहा है तो वो शायद क्विडिच का ग्राउंड है. इसी की बात कर रहा हूँ मैं जो उस साइड है. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, यार मेरा ध्यान अभी सिर्फ ग्राफिक पे है. स्काई वगैरह सब कुछ कितना क्लियर है. हल्की बारिश हो रही है. Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. भाई बाहर भी काफी खूबसूरत है यार. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. वो यार वो जो मेन गेट है वो काफी ज़्यादा दूर है. And was able and to अभी तो मैं बाहर आया भी I नहीं. had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section. I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. सही है मैं कलेक्ट कर लेता हूँ. To look at. Maybe आगे काम आएगा. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. जैसा कि ये बोल रहा है कि कोई पोशन बनाने के काम आएगा ये. एक सेकंड कुछ तो आवाज कर रहा था अभी. शायद ये पौधे. इन्हें मैं कलेक्ट नहीं कर सकता.
Mr. Moon is देखो शायद हम लोग विलेज पहुंच चुके हैं My एंड वो sister रहा Anne गेट thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather. ओके ये रहा हॉग्समीड She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. इसे मैं अनलॉक नहीं कर सकता हूँ इसे इसके लिए मुझे अपनी लेवल अपग्रेड करनी पड़ेगी I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths. देखो जो भी है यार to a विलेज flame. काफी खूबसूरत है एंड ये मैच कर रहा है जैसे हैरी पॉटर में था ना जहाँ पे किताबें लेने जाती हैं वो कौन सी गली थी यार वो शायद कोई जादुई गली ऐसा कुछ समथिंग So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. ओके तो अभी मुझे जाना है अपने लिए 4 चीज़ें खरीदनी है जैसा कि 4 लोकेशन सेट है यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे जाऊँ एंड मेरे ख्याल से एक सेकंड ये क्या है Revelio. ओके मैं समझ गया ये बॉन्ड शॉप है यानी कि यहाँ पे मुझे वो जादुई छड़ी मिलेगी क्योंकि मेरी वैसे भी सेकंड और टूटी हुई थी जो मुझे प्रोफेसर फिग ने दिया था तो टाइम है अभी अपनी खुद की परचेस करने का भाई ये सही है I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. ओके सर Hello, sir. I'm looking for. For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new 5th-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? देखो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इतना पॉपुलर हूँ क्यों No. मतलब दुकान वाले को ही मेरे बारे में पता है ऐसा छड़ी वाली जो बेच रही है अंकल Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. हाँ सर मुझे लगता है ये मुझे कुछ ज़्यादा सूट नहीं करा Well, this isn't a good match at all, is हाँ it? मुझे भी यही लगता है We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heart. सर मैं बता दूं कि ड्रैगन मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते Let's वैसे give this one a try. मैं ट्राई तो कर लूंगा लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ ड्रैगन मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता जैसा कि मैंने कहा था Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. ओके तो अभी एक सेकंड शायद मुझे ये अपनी बनानी पड़ेगी बॉन्ड मेरे ख्याल से मुझे वाइट ही सही दिख रहा है एक सेकंड में और भी देख लूं मेरे ख्याल से ये सही है एक सेकंड यही सही है ओके थोड़ा बड़ा कर लूं क्या मैं इसे
मेरे ख्याल से वेरी फ्लेक्सिबल, ये सही रहेगा. Curious indeed. सही है. देखो ड्रैगन मुझे वैसे भी पसंद नहीं करते, फिनिक्स नहीं. मेरे ख्याल से मुझे यूनिकॉर्न लेना चाहिए. And faithful to its owner. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. ओके तो मैं वापस भी आ सकता हूँ. खैर मैंने इनकी शॉप तो विजिट कर लिया. टाइम है 3 और शॉप को विजिट करने का, जहाँ मुझे पता नहीं है कि क्या मिलेगा. जाकर मुझे देखना पड़ेगा. थोड़े बहुत ग्लिचेस है गेम में अभी भी, बट वो बहुत माइनर है, उतना मैटर नहीं करेगा. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Okay, तो ये पोशन की दुकान है, और मुझे शायद पोशन खरीदना है, जो कि प्रोफेसर ने बताया था. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? हाँ, अब वैसे भी काफी ज़्यादा टाइम हो गया, काफी ज़्यादा ही बता दिया आपने. देखो बाकी चीज़ें तो मुझे नहीं लेनी है शायद. यहाँ मैंने ले लिया है सब कुछ, तो अभी डन है. यहाँ पे 2 और शॉप है जो मुझे विजिट करनी है अभी. ओके, इसके नीचे मुझे वैसे जाना नहीं, लेकिन ये जो पेपर है वो मैं ले लूँ. अरे यार ये मैं बार बार गलत स्पेल चूज कर लेता हूँ. ओके, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. ओके हाँ, जैसा कि प्रोफेसर वीजली ने बताया था कि यहाँ पे सीड्स लेना है मुझे किसी तरह के. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me.
But what say we get you a packet of Dittany seeds? तो देखो, अगर मेरे दिमाग में कभी आता है कि मुझे पोशन बनाना है तो मैं यहाँ से इंग्रेडिएंट्स खरीद सकता हूँ अगर मेरे पास पैसे कम हो तो, एंड अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा है तो मैं आराम से फिर जाके वो शॉप से डायरेक्ट पोशन खरीद सकता हूँ, फिर मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक शॉर्टकट भी है यहाँ पे कि अगर उतना मतलब इंग्रेडिएंट वगैरह खोजना है नहीं है, अगर कुछ ज़्यादा ही जल्दी मिशन करना है तो डायरेक्ट मैं जाके पोशन भी खरीद सकता हूँ, जो कि सही है। लेकिन फिलहाल मुझे अभी एक लास्ट शॉप पे जाना है एंड मेरे ख्याल से ये कपड़े की शॉप होने वाली है। ओके, कहाँ है वो कपड़े की दुकान भाई? थोड़ा आ गई है। ओके, मेरे ख्याल से ये रही, ये बुक्स की दुकान है क्या? मेरे ख्याल से यहाँ मुझे सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, ये बुक्स की दुकान है यार, मैं कपड़े की कह रहा था, सॉरी। Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. Okay, तो मुझे कुछ spellcrafts है जो भी चाहिए. And a potion station. Yes? I believe so, sir. And अगर मुझे अभी फ्यूचर में और भी चाहिए होगा तो फिर मैं यहाँ से आकर खरीद सकता हूँ। अच्छी शॉप है ये भी। And एक तरह से तुम कह सकते हो कि मुझे अपनी एबिलिटीज भी पता चल रही है कि मैं क्या-क्या अगर एक बैटल होता है तो मैं यूज कर सकता हूँ। काइंड ऑफ ट्यूटोरियल एंड काफी अच्छा ट्यूटोरियल है। समझाने का तरीका इस गेम में मुझे काफी पसंद आया। ओके भाई, ये तो एक सीक्रेट रास्ता था। मुझे लगता है हॉगवर्ट्स में भी ऐसा कुछ होगा। खैर यहाँ ऐसा है क्या, पहले वो चेक कर लो। एंड सर को शायद कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई है अगर मैंने खोल दिया है तो। खैर जो भी है, यहाँ से एक सेकंड कुछ पेज गया है वहाँ पे। Revelio. ओके, वो रहा वो पेज। Accio. सही। कितने मुझे 8 कलेक्ट करने हैं ऐसे पेजेस, एंड मैंने 2 कलेक्ट कर लिया अभी। ओके, यहाँ भी कुछ है शायद। Revelio. हाँ, ये रहा। ओके, मैंने 3 तो इकट्ठे कर लिया। ओके, तो अभी टाइम है जाके सेबेस्टियन से मिलने का, क्योंकि मैंने जितने भी शॉप थे वो सारे विजिट कर लिया है। जितने भी टीचर्स ने लाने को चीज़ें कहा था मैंने सब ले ही लिया है। तो अब टाइम है यहाँ से निकलने का। एंड अच्छी प्लेस है ये, मैं देख भी चुका हूँ। बस हाँ, अभी तक मुझे कुछ ऐसा क्लोथिंग वगैरह नहीं दिखा, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे वही चेंज करना है। लेकिन यार अभी उतने पैसे भी नहीं है, मैंने कमाए नहीं है कुछ। I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. ओके, ये रहे ट्रोल्स। एंड मेरे ख्याल से अब इनसे बैटल होने वाला है एंड ये काफ़ी मज़ेदार होगा। इन लोग के बारे में कुछ ज़्यादा ही हाइप बना दिया टीचर ने। अब वो सच है या गलत वो अभी पता लगेगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे मौका मिलेगा फाइट करने का, लेकिन ठीक है, अभी मुझे लगता है कि मुझे मिल जाएगा मौका। ओके, सब लोग जा चुके हैं, सिर्फ मैं और सेबेस्टियन है यहाँ पे। एक सेकंड। ओके, डॉच सही। किधर है वो? ओके ओके ओके, बढ़िया भाई। अभी एक सेकंड मेरे पास अभी यही है, बाकी सब मैं उसे खींचने के लिए यूज कर सकता हूँ, जो कि फायदा है नहीं। अरे बच गया।
क्या बचाऊं मैं? ओके एक सेकंड, जेड रुक जाओ। ओके मैं समझ गया, मैं ये सामान फेंक सकता हूँ एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेल्थ खा रहा है उसकी। सही। मैं समझ गया मुझे क्या करना। अरे यार फिर निकलो यहाँ से, निकलो दोस्त। ओके सामान चाहिए मुझे। ओके वो रहा सेट। ओ अरे यार तो भागना पड़ेगा मुझे। हेल्थ कम है लेकिन चलेगा, 20-40% है फिलहाल टाइम है इस पर सामान फेंकने का। ओके एक बार है उसका बस। सही, ज़्यादा नहीं है। ओके मेरे पास हेल्थ भी वैसे ज़्यादा नहीं है। भाई उस पर भी अटैक कर ले दो। ओके आराम से। ओके भाई हेल्थ काफ़ी कम है। थोड़ी बहुत हेल्थ है मेरे पास अभी। हेल्थ बढ़ाने के चक्कर में अभी मैं रहूँगा ना तो वो मार देगा, काफ़ी तेज़ है। थोड़ा बहुत है बस। ओके भाई जल्दी पोशन। ओके सही, चलो एक और शॉट बस लास्ट है। अरे कुछ है नहीं क्या? एक सेकंड बच गया, बढ़िया। ओके मेरे ख्याल से खत्म हो गया है। ओके X2 ओके ठीक है। भाई मेरे पास कुछ खतरनाक मैजिक नहीं है। अगर ये मैं सीख लूँ तो मैं एक शॉट में खत्म कर दूंगा यार। मजेदार था ये। Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll? हाँ मतलब ऐसा कुछ हुआ तो था अभी। I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. खैर अच्छा हुआ मैंने यहाँ आने से पहले वो स्पेल सीख लिया रिपेयरों का, जिससे मैं सब कुछ रिपेयर कर सकूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तोड़-फोड़ कर दिया मैंने यहाँ पे। तो टाइम है अभी सब कुछ सेट करने का। एक सेकंड रिपेयर। अरे यार रुको, थर्ड। ओके सही। मुझे लगता है मुझे सबके पास जाने का जरूरत नहीं है, मैं यहीं से कर सकता हूँ सब कुछ। ये असली ज़िंदगी में अगर हो जाता ना भाई, मैं अपना रूम ठीक करता सबसे पहले तो। और क्या कुछ नहीं बनाया था मैं। खैर एक सेकंड अभी। ओके वो तो हो गया भाई। एक सेकंड, कहाँ से पत्थरें आ रही हैं? मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। तो नहीं अभी है अभी एक और वहाँ पे। ओके घर भी था, मैंने वो भी बना दिया। और कुछ मेरे ख्याल से नहीं। ओके हाँ सब कुछ सेट है। एक सेकंड, मुझे इस स्टोर में जाना है क्या? हाँ शायद। ओके यही है शायद वो क्लोथिंग शॉप जिसकी मैं बात कर रहा था। Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardwear, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. क्या करूँ मैं, लूँ या नहीं लूँ? Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Okay, sir. तो क्या है अभी? Ready for your perusal today. Take your time. Okay, वो तो केप था। I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. रुको एक सेकंड, पहले मैं इन्वेंटरी में जाके चेक कर लेता हूँ। ओके ये रहा गया। ओके ये स्कार्फ है।
मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। सही है। एक सेकंड, ये दूसरी ड्रेस भी है मेरे पास। और भाई ये ज़्यादा सही लग रही है मुझे। हाँ ये ज़्यादा सही लग रही है मुझे। एक सेकंड, ये मुझे दिया था उन्होंने। ये लेवल 5 का है, सॉरी इसका डिफेंस 5 है। चलो सही है अभी। एंड मैं जाने के लिए भी अभी तैयार हूँ। एंड अभी हमें जाना है बटर बियर पीना। एंड मैं बता दूँ बटर बियर अल्कोहल नहीं है, वो बस बटर से बनती है, ऐसी कोई। Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. एक सेकंड, ये तो नैनरॉक है। You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. मुझे लगता है इसने देख लिया तो अभी भागना पड़ेगा यहाँ से। Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood, the goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my Okay, तो मुझे लगता है भाई मुझे इससे फाइट करना पड़ेगा। I wouldn't do मुझे that इसमें if I कोई खास were दिक्कत नहीं है। Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. ओके तो मेरे ख्याल से भी टाइम है यहाँ से बाहर जाने का। I think we should head back to the castle. क्योंकि यार बहुत लेट हो चुका है। इससे पहले कि टीचर्स को पता चले कि हम लोग हॉगवर्ट्स में अपने कॉमन रूम में नहीं है, इससे पहले हम लोग को वहाँ पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो हाँ, आज के लिए बहुत ब्लडशेड हो गया, काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर कर लिया एंड काफ़ी फाइट भी हो गई। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।